Question is solve 5 raised to power x plus 1 plus 5 raised to power 2 minus x is equal to 5q plus 1. The first apply the law of exponent. According to the law of exponent, we can write it is in the form of, listen, 5 raised to power x into 5. Is it there? So 5 raised to power x into 5. What is the answer? What is the power of 5? 1. 1 plus x. Same, okay? And how to write this one? 5 raised to power 2 divided by 5 raised to power x. Because minus I thought a raised to power m minus n equal to a raised to power m divided by a raised to power n equal to, what is 5 cube? 120 plus 1. Yes, step clear? Next step. Let 5 raised to power x is equal to y. Put 5 raised to power x is equal to y. So what is the first equation? 5y 5y plus 25 divided by y, because 5 squared 25 divided by 5 raised to power x y is equal to 126. What is LCM? Y. Cross multiplication. 5y square plus 25 is equal to 126. Cross multiplication. 5y square plus 25 is equal to 126y. Shift all one side. So 5y square minus 126y plus 25 is equal to 0. Now, splitting middle terms by factorization method. Solve this equation by factorization method. 5 into 125. 5 into 125. 126. What are the factors? Sorry, 125. Now 5 into 125, that is 125. What are the factors? 125 and 1. 125 plus 1, 126. Right? So what are the factors? 125 and 1. So 5y square minus 125y minus y plus 25 is equal to 0. What are factors? 5y common, y minus 25 minus 1 common, y minus 25 is equal to 0. Y minus 25 into 5y minus 1 is equal to 0. Y equal to 25 or y is equal to 1 by 5. Now y minus 25 equal to 0, y equal to 25. 5y minus 1 equal to 0, y is equal to 1 by 5. ये clear steps? Yes or no? But we क्या find करना है? X. And what is the value of y? The value of y is equal to 5 raised to power x. Abhinav Singh, Arjun, switch on camera. So y 5 raised to power x equal to 25. 5 raised to power x equal to 5 square. Bases are equal, exponents are also equal. If bases are equal, exponents are also equal. Implies x equal to 2. Bases are equal, exponents are also equal. By using that, x equal to 2. Same way. What is y? Y raised to power 5 raised to power x. What is 1 by 5? 5 raised to power minus 1.
Base are equal. Exponents are also equal. X equal to minus 1. Therefore, x is equal to answer 2 comma minus 1. This is the answer. X is equal to 2 comma minus 1. Okay, clear? Next question. A boy standing on a boy standing on a horizontal plane. A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. At a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. First, a girl standing on the roof of 20-meter high building, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Both the boy and the girl are on the opposite side of the bird. The same type question किया था, kite वाला question याद है? ठीक है? Find the distance of the bird from the girl. Find the distance of the bird from the girl. Draw the figure. Here. B is the position of the boy, and a girl is on the roof of a 20 meter high. A girl is where? Standing on the roof of a 20 meter high building. 20 meter high building. 20 meter high building. This is the position of the girl. Okay. CG, that is a building. C is the foot of the building. G is the top of the building. Where is the girl? Top of the building. Top of the building. Top of the building. The boy is standing on the ground. So this, for boy, this is the eye level. And girl, this is the eye level. So girl का eye level draw कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट में ड्रॉ कर सकते हैं. अभी क्या करना है कुछ में? A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an elevation of 30 degree. At an elevation of 30 degree. Okay. This is the position of bird. Bird को dealing. Bird. Okay. This is the position of the bird. And at a distance of what? 100 meters. At an angle of elevation 30 degree. At an angle of elevation 30 degree and at a distance 100 meters. The bird is flying at a distance of 100 meters from the boy. And the angle of elevation of the bird, that is 30 degree.
Angle of elevation of the bird, that is 30 degree. So इसको vertical distance draw कर सकते हैं. And what is this? Eye level of the girl. This is the eye level of the girl. And the angle of elevation of the same bird is 45 degree. 45 degree. पहले आप लोग क्या करना है? In triangle, I don't. BFD. In triangle BFD. In triangle BFD. Tan 30 is equal to, what is tan 30? Tan 30 is equal to DF upon, hypotenuse given है, sin 30 find कर दो, not tan, sin 30, hypotenuse given है, hypotenuse given है तो sin नहीं तो cos, हमको ये चाहिए, ये वाला side और hypotenuse given है, देखो, this is the opposite side of 30, hypotenuse given है, so apply sin 30, sin 30, sin 30 is equal to DF divided by BD. What is sin 30? 1 by 2. What is DF that you have to find? Or BD? 100. So what is DF? 100 divided by 2. 50 meter. देखो DF की वैल्यू आ गई मेरे पास. What is DF? 50. और what is CG? CG same as EF. EF is equal to CG is equal to 20. ना देखो ये सेम है, CG ABC सेम है 20. अभी क्या फाइंड करेंगे? DE फाइंड कर सकते हैं. ये पूरा कितना है? DF कितना है? व्हाट इज DF? 50 और EF 20. So what is DE? I don't. DE is equal to DF minus EF minus EF. What is DF? Minus 20 minus 20. So D is equal to, question में क्या पूछा? Find the distance of the bird. What is bird here? D from the girl. Girl distance कितना है? DG. DG फाइंड करना है. Which triangle? From which triangle? DEG. देखो ये तो हमारे पास है. ये फाइंड करना है. कौन सा यूज करना है? Again sin. Use again sin. In triangle DEG है ना. देखो ये फाइंड करना हमको हाइपोटेनस. DE तो फाइंड किया आप लोग. व्हाट इज अ DE? 30. देखो ये 30 है, ये हमारे पास है. DE हमारे पास है. ये फाइंड करना तो कौन सा अप्लाई करना है? साइन. ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन. सो साइन 45 is equal to DE divided by DG. What is sin 45? Or DE 30 or DG that you have to find. Cross multiplication. So what is DG? DG is equal to 30. And therefore, distance of the bird from the girl is 30 root 2 meter. 30 root 2 meter.
Next question. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water, which is 10 meter above water level. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level. He observes the angle of elevation. He observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree, and the angular depression of the base of the hill as 30 degree. Angular depression of the base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill and the height of calculate the distance of hill from the ship and the height of the hill. A man, where is the man? Standing on the deck of a ship. So draw the figure. A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level. So this is a water level, okay. So A, B is the water level and the man is 10 meter above the water level. That is on the deck of a ship which is 10 meter above the water level. So what is this? Eye level of the man. This is the eye level of the man. So draw the eye level of the man. And the hill. BD. What is BD? Hill. H is the height of the hill. What is H? Height of the hill. H is the height of the hill. What is H? Height of the hill. Okay, clear? And what is the angle of elevation of the top of the hill? 60 degree. So draw angle of elevation of the top of the hill 60 degree, and angular from the same point, the angular depression of the base of the hill. This is the base of the hill. Is 30. अगर है 30, this is also 30. तो छोड़ दो ऐसे ठीक है, क्लियर? देखो अगर 10 है, AC 10 है तो BE कितना होगा? So what is the value of DE? H minus 10. X small. This is X. So this is also X. First apply. In triangle BEC, write down. In triangle BEC,
in triangle BEC, it's not sine, tan 30 is equal to BE divided by CE. BE divided by CE. What is tan 30? So 1 by root 3 is equal to BE 10 CE x, cross multiplication, x is equal to 10 root 3 meter. 10 root 3 meter. This part is clear? Yes or no? Okay, x की value आ गई. Next apply in which triangle? CED. In triangle CED, tan 60. What is tan 60? That is equal to DE divided by CE. What is tan 60? Root 3. What is DE? H minus 10. What is CE? X. So root 3 is equal to H minus 10 divided by, what is X? Cross multiplication. 30 is equal to H minus 10. What is H? What is the height of the hill? 40 meter. Calculate distance of the hill from the base of the ship. Don't say X. What is X? 10 root 3 meter. I don't. The distance of the hill from the ship, from the distance of the ship from the base of the hill is equal to 10 root 3 meter, and height of the hill is equal to, from the base, ये है ना शिप, ये शिप का पोजीशन ही दे. क्वेश्चन में क्या पूछा? डेक ऑफ द शिप नहीं है. क्वेश्चन में क्या पूछा इसमें? शिप का सेम लेवल है ना, ये सेम लेवल है, तो वही सेम डिस्टेंस हो गई. Calculate distance of the hill from the ship and the distance of the hill from the ship and the distance of the hill and the distance of the hill. ये पूछो तुम. Clear? Clear? Next question. A shopkeeper buys. This is the deck of the ship. ठीक है, ये इतना ऊपर है, शिप का पोजीशन है, डेक की तरह ऊपर है, 10 मीटर अबव है. शिप, इधर शिप होता है, इसका डेक किधर है? 10 मीटर अबव है. ठीक है, मैन. Next question. A shopkeeper buys a number of books. A shopkeeper buys a number of books for ₹80. If he had bought 4 more books of the same amount, each book would cost ₹1 less.
how many books did he buy? Number of how many books did he buy? बहुत क्वेश्चन हम किया इसी तरीके, स्पीड वाला क्वेश्चन है, बुक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथ वाला क्वेश्चन से भी किया था. A shopkeeper buys, means first क्या let करना, let the number of books, number of books he bought is equal to x. ठीक है, that x number of books he bought. Clear? Now then number of books x है, then what is the cost per book? I don't, the cost per book, number of books x हो गए. अब cost per book ही, एक एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, 80 डिवाइड बाय x हो गए, है ना. क्वेश्चन में दिया था रुपीज 80 के लिए दिया था x बुक्स, तो पर बुक कितना कॉस्ट होगा, कॉस्ट पर बुक इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय x, कॉस्ट पर बुक. और क्या करना है, he bought 4 more books, so number of books he bought extra कितना, 4 more, तो टोटल बुक्स कितने हो गए, x plus 4. Number of books he bought extra is equal to 4. Therefore, total number of books is equal to x plus 4. X plus 4. अभी फाइंड कर दो, what is the cost per book now? 80 upon x plus 4. 80 upon x plus 4. है ना, cost per, है ना, cost of the book, है ना, cost each book का कॉस्ट, each book का है ना, कॉस्ट पर बुक है ना, इसी को 80 अपॉन x प्लस 4, विच इज ग्रेटर, 80 अपॉन x और 80 अपॉन x प्लस 4, 80 अपॉन x, इन दोनों का माइनस करना. तब कॉस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में, ₹1 लेस इक्वल टू 1, विच इज कॉमन, 80, 1 अपॉन x माइनस x cancel, 320 divided by x squared plus 4x equal to 1. Cross multiply, 320 is equal to x squared plus, shift all one side, so x squared plus 4x minus 320 is equal to 0. 16 and 20 are the factors, है ना, 20 into 16 कितना है, 320. यहाँ तो चेक कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो x स्क्वायर प्लस 20x minus 16x equal to 0. X common, x plus 20 minus 16 common, x plus 20 equal to 0. So x plus 20 into x minus 16 equal to 0. X equal to minus 20 or x is equal to 16. But number of books cannot be negative. So number of books he bought is equal to 60. ये क्वेश्चन है. I don't solve for x. Solve for x.
अंडर रूट 6, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 is equal to 0. Under root 6x plus 7 minus 2x minus 7 is equal to 0. Is equal to 0. Listen. कोई भी क्वेश्चन में रूट आ गई तो क्या करना? Which is the root term? You have to keep all the root terms one side and the remaining terms right hand side, that's other side. Here a root term, you have to keep this root left hand side. 6x plus 7. You have to shift this 2x minus 7 right hand side. ये ठीक है steps? Yes or no? अब क्या करना है? Squaring on. इसके बाद this is equation 1 है, ध्यान रख दो, हमेशा पुट करना equation 1, लास्ट में काम आएगा इसको, ठीक है। equation 1. Next, squaring on both sides. Squaring on both sides. बताओ, what is the square of under root 6x plus 7? 6x plus 7. 6x plus 7. 6x plus 7 is equal to 2x minus 7 whole square. इधर से देखेंगे, पहले इधर डालो, 2x minus 7 whole square. 2x minus 7 whole square. ये क्लियर है? Next, 6x plus 7 is equal to a minus b whole square. बताओ, 4x square minus 2ab, 2 into 2x into 7 कितना है? 28x plus 49. Shift all right hand side. 0 is equal to 4x squared minus 28x plus 49 minus 6x minus 7. That is 4x square minus 34x, है ना? 28 plus 6, दोनों माइनस है ना, तो ऐड करना, ए भी माइनस है, ए भी माइनस, ऐड करना, 28 plus 6 कितना है? 34 plus 42 equal to 0. 42 equal to 0. So okay, 2 से डिवाइड कर दो, 2x square minus 17x plus 21 is equal to 2 into 21, 42. What are factors? 14 and 3. 14 plus 3 कितना? 17. Now 14 plus 3, 17. 14 into 3, 42. ना 14 चेक कर दो ना, 42. क्लियर है? इसमें कितना टाइम्स? 2, इधर 21 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, दोबारा 2 इधर, सॉरी 7 इधर, 7 2s are 14, ये 3, 14 plus 3 17, ठीक है, ये प्लस साइन है ना, ठीक है। सो व्हाट इज आंसर? 2x square minus 14x minus 3x equal to 0, which is common. अंदर x minus 7 minus 3 x minus 7 equal to 0. X minus 7 2x minus 3 equal to 0.
x equal to 7, x is equal to 3/2. बॉटम एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, हम चेक करना है ये दोनों आंसर सही है नहीं है। कोई भी स्क्वायर रूट क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रख दो, ये चेक करना आपका आंसर सही है नहीं है, ये चेक करना। देखो हाउ टू चेक, अभी हम चेकिंग करना, देखो हाउ, ये हमेशा ध्यान रख दो। कोई भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, इसलिए इक्वेशन 1 में पुट करना आपको, इक्वेशन 1 में देखो चेकिंग के लिए। देखो फर्स्ट, when x is equal to 7, so under root 6 into 7 plus 7 है ना, 6 into x की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 2 into 7 minus 7, ये पुट कर दिया मैं इक्वेशन 1 में पुट कर। देखो x की वैल्यू 7 पुट कर दिया, क्लियर है? ऐसा ना। नेक्स्ट, अंडर रूट, ये दिखाना चाहिए एग्जाम में, 7 6 आर 42, है ना, 42 प्लस 7 49 इज इक्वल टू 14 माइनस 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 इक्वल टू 7, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, सो x इक्वल टू 7 करेक्ट आंसर आ रहा है, सो इट इज ट्रू, therefore x equal to 7 is a solution. Next, second part, under root, केस कौन सा है, केस कौन सा इसमें, when x is equal to x is equal to 3/2, so under root 6 into 3/2 minus 7 is equal to 2 into 3/2 minus 7, sorry plus है, 6x plus 7 है, 6x plus 7, चेक कर दो, ये कैंसिल है, अंडर रूट 3 into 3 9 plus 7 16 इक्वल टू, एक कैंसिल है, 3 minus 7 अंडर रूट 16, ये -4। एक चीज ध्यान रखना, अंडर रूट 16 इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 4, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। अंडर रूट 16 इज ऑलवेज एक ही आंसर हो सकता है, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा +4। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे आ रहा है, देखो ये कंफ्यूजन अवॉइड करना, देखो लिसन, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तब x इक्वल टू प्लस और माइनस 2 है, 2 रूट जीरोस आएगा इसमें से, अंडर रूट 16, समझ में आ रहा है? ये प्लस और माइनस, अंडर रूट 16 का आंसर क्या है 4, पॉजिटिव 4, ये प्लस और माइनस क्यों, इसकी वजह से 2 जीरोस आएगा ना, एक प्लस से एक माइनस, मीन्स देखो 4 into 4 क्या आंसर है 16, -4 into -4 16, इस वजह से दोनों आंसर आ सकते हैं, है ना। अगर अंडर रूट 16 के वैल्यू हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होगा, मींस पॉजिटिव 4 होगा, ये 4 इक्वल टू -4 ट्रू नहीं आ रहा है, सो x इक्वल टू 3/2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, जिसका आंसर एक ही आ रहा है, कौन सा 7, दोनों आंसर लिखा तो गलत हो गया आंसर, समझ आ रहा है? स्क्वायर रूट है तो हमेशा चेक करना, कोई भी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में हमेशा चेक कर देना, क्लियर? therefore मींस इधर x इक्वल टू 3/2 is not a solution, therefore x is equal to 7, एक ही आंसर है इसमें, x is equal to 7, clear? It is. दिखाओ क्वेश्चन,
That's your question. What is the expression for a polynomial represented by the graph? Represented by the graph. Represented by the graph. The points बताना चाहिए मुझे. Draw the figure. One, 2, 3, 4, 5, 6. इधर -1, minus -6, -7, -8. इधर नीचे ये पॉइंट कौन सा है? ये कौन सा पॉइंट? -3 और ये पॉइंट हो दो 1 और ऊपर वाला पॉइंट हो दो ये पॉइंट ये पॉइंट कौन सा? 6 और ये है और करस्पॉन्डिंग इधर 1. Draw the graph. Parabola, shape of the graph is parabola. Parabola is the shape of which polynomial? Quadratic polynomial. Quadratic polynomial, quadratic equation का polynomial. इसका मतलब ये quadratic polynomial है. ऐसा ना? ये downward है. What is the general formula of quadratic equation or quadratic polynomial है? Ax square plus bx plus c 0. A quadratic equation. Quadratic so polynomial पूछा ना? Write the expression for the polynomial. तो equal to 0 नहीं चाहिए हमको. ये quadratic polynomial है. This is a quadratic polynomial. Ax square plus bx plus c. ये downward है, upward है. क्या बोला मैं? अगर downward है, coefficient of x squared is always negative है. अगर upward है, coefficient of x squared is always positive. ये हमेशा ध्यान रख देना. नहीं आता तो नोट कर देना. If coefficient of x squared, if coefficient of x squared
is negative, then the shape of parabola, ये तो the shape of graph लिख देना, the shape of graph concave downward, concave downward, concave है ना parabola, that is downward, ठीक है, ये क्लियर है, concave downward, ठीक है, parabola है, या parabola, shape of the parabola, this shape of the graph is parabola, that is concave downward, parabola है, ठीक है. Next, if coefficient of x square is positive, then the shape of graph is concave upward, concave upward. ये figure का नाम क्या? Parabola. What is the name of this figure? Parabola. Parabola. The shape of the graph is parabola. ये डाउनवर्ड है, तो ये कंफर्म हो गई ए नेगेटिव है ना, ये कंफर्म हो गई ए नेगेटिव, ए नेगेटिव. अब हम ए की वैल्यू फाइंड करना, बी की वैल्यू फाइंड करना, सी की वैल्यू भी फाइंड करना. पहले देखो, this graph that passes through 2 points on x-axis, एक is 3, एक -3, एक 1. ये -3 है, इसको मतलब x equal to -3 एक solution इसका, और it also passes through, so x equal to 1 is also a solution. What are the two solutions here? X equal to 1 or x equal to -3. X equal to 1 and x equal to -3 is the other solution. Right? So the quadratic polynomial is, the required quadratic polynomial is k into x minus plus 3 into x minus 1. देखिए क्यों क्लियर है? ये पुट करना याद है ना, उसने बोला था मैं, ये +3 क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -3, सो माइनस से शिफ्ट इधर कर दो, +3, इधर x इक्वल टू 1, इधर शिफ्ट किया तो -1 है ना, x इक्वल टू -3, इसका मतलब इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा, x +3 इसका फैक्टर है, और x इक्वल टू 1 इधर आए तो क्या होगा, x minus 1, so that is k into क्या होगा, x squared minus x plus 3x minus 3, that is k into x squared plus minus 3. ओके, की वैल्यू फाइंड करना है तो ऐसे छोड़ दो, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, वी कैन राइट इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है, के की वैल्यू का डिपेंड होता है, ठीक है. सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ग्राफ से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है? क्लियर है? बता रहा हूं, ठीक है. अभी एक उसने बोला हमको मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है. ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊं मैं कैसे फाइंड करना है, ठीक है. ये भी तो प्रूफ बताऊं मैं, ये ठीक है. स्टेप्स क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है. सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस ग्राफ गिवन है, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक मेथड होता है. ये क्लियर है? ठीक है. सर ये नोट कर दो, के की वैल्यू एक चीज ध्यान देना, के इज नेगेटिव होगा इसमें, के इज नेगेटिव है. क्यों के नेगेटिव बताओ? ये प्रॉपर्टी है,
क्यों? बिकॉज ए डाउनवर्ड है, तो के की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए इसमें, ठीक है, ठीक है, ये कैसे फाइंड करना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।